I tried JEE, okay, but my JEE rank was like a mobile number, so I didn't get any colleges. हर दिन मैं 20 to 30 कंपनीज में अप्लाई करता था through LinkedIn or through their job portals, and for 1 or 2 months I didn't get any replies from any of the companies, and the one that I got reply from, they were saying that they will not take any MCA student, or they prefer BTech students more. Nowadays, nobody cares about your degree. Okay, any product-based company, if you have skill, they will take the interview. But from interview, uh, it's you who is capable, like who is responsible to get into that company. Okay, and for that you have to be skillful. You have to have patience, because from tier 3 colleges, like it's not like you are only applying to product based companies, you have to apply on other companies also, right? So other companies mostly prefer BTech, so you have to have patience and always try. If it is not the first time, if you're not succeeding in the first time, you will succeed in the second time or in the third time, but just try. So the thing is, पेशेंस, कीप ट्राइंग, और स्किल चाहिए ही, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ाई करते रहो बस। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. We are back with a new video. This video is going to be really special for people who want to get into Amazon. So watch this video till the end. And before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press our bell icon so that you can always get the notification for all our upcoming videos. So for this session, we have Rounak with us. Rounak did his graduation in BSc, and right after that, he went ahead with his masters in computers and application. Rounak did his graduation from a tier 3 college, but now he is working as a software engineer in Amazon. So today we will be discussing how he cracked Amazon and what all things you guys can also do despite being from a tier 3 college, and you can also crack Amazon. So watch this video till the end. Welcome Rounak. Thank you for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Yeah, so my name is Rounak. I did my 12th standard from a high school in my village, and then I did my BSc in computer science from a college in West Bengal, and then somehow I did my MCA, and then I was placed in a startup from the on-campus placements, and after that, after 1.5 years, I joined Amazon, and from then I have been working in Amazon. Okay, Ronak. So I'm going to be asking you a very basic question. मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में करी है, राइट? और उसके बाद भी आपने सारी चीजें कंप्यूटर साइंस में ही करी है. You always had a career in software engineering or something related to coding. So why didn't you like go for a BTech degree or something which is like more technical? Why did you go for a BSc one? Oh, it's not like that. I didn't try it. I didn't get it actually. So the thing is, after 12th, I tried to I tried JEE, okay, but my JEE rank was like a mobile number, so I didn't get any colleges. So I thought that even in my 12th, I used to like maths a lot. So I thought that okay, I'll be a maths teacher. So that is why I tried to do a BSc. And the thing is, the college I got for maths, so I got a waiting rank for maths. Also, it was like maybe waiting rank 2. Okay, so in the same college, I got a placement for computer science also. So I thought, okay, it will take some time, but I'll get the seat in maths also. So I joined in computer science, but maybe fortunately or unfortunately, I don't know, but I didn't get the seat in maths, and I continued with computer science, and that is how I continued with BSc. Okay, great.
ठीक है रौनक, सो ठीक है, सो आपने स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस तो पढ़ी है, मतलब ग्रेजुएशन में भी। सो कैन यू जस्ट टेल अस कि मतलब कॉलेज में हाउ वाज द कल्चर लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस मेजर होने का मतलब तो ये है कि आप कोडिंग तब से ही कर रहे हो, लाइक फर्स्ट ईयर से, राइट? सो हाउ वाज द कोडिंग कल्चर इन योर कॉलेज, एंड वाज इट इवन देयर? इफ नॉट, देन हाउ डिड यू यूज टू डू इट? कुछ था आपके आसपास का ऐसा माहौल जिससे कि आप और पुश होते थे कोडिंग करने के लिए, या फिर यू वर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन? Okay, see, the BSc curriculum is very different from the BTech curriculum actually. So Okay. is more focused into the theory section of computer science rather than the implementation part. So when I joined, like when I was doing my first year in the BSc, so we used to, like, we had only one language in the first year, and other than that, every was a theory part. So the thing is, हम लोगों ने सब दोस्त मिलके ऐसा किया कि चलो कोडिंग करते हैं, क्योंकि सबका ही एक ही फोकस था कि गोल है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए। तो हम लोगों ने दोस्तों ने मिलके कोडिंग प्रैक्टिस किया था, और फर्स्ट लैंग्वेज सी सीखा था हम लोगों ने, एंड देन उससे उससे उसके बाद अपग्रेड करते गए, तो कोडिंग थोड़ा सा बढ़ता गया, और बीएससी में थोड़ा थोड़ा कोडिंग आता था, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कि हो जाए कि सब लैंग्वेज में एक क्या बोलूं, सब लैंग्वेज सीख नहीं पाता था, बट फिर भी ठीक था। बट ऐसा नहीं कि कोडिंग जो आप बोलते हो कोडिंग एनवायरनमेंट, बीएससी में ऐसा नहीं होता है। बीएससी जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि पीएचडी या फिर हायर स्टडीज के लिए, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए बीटेक ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है एक्चुअली। समझ गई। ठीक है रौनक, सो ठीक है, आपने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो तो लाइक टियर 3 कॉलेज से करी है, एंड विद दैट टू आल्सो अ बीएससी डिग्री, राइट? बट आफ्टर दैट यू गॉट योरसेल्फ एनरोल्ड इन अ मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, दैट टू फ्रॉम अ रियली गुड college, right? So can you like tell us how was the entire process like, and what motivated you to pursue a masters in this field? And plus you can also tell us कि क्योंकि obviously आपने masters जहाँ से करी है वो college काफी अच्छा है, तो can you tell कि what was the major differences that you felt in the overall environment, किस तरीके का culture है, और how was your entire journey like being a master's student in a good college? So like coming into MCA was also a story. So the thing is, बीएससी जब कर रहे थे तो ऐसा हो गया था माइंडसेट कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर भी, ऐसा था मेरा अंदर की टीचर भी बनना है थोड़ा सा, तो सीनियर्स को देखते थे तो दे वर मोर इनटू पीएचडीज, ओके, दे वांट टू डू पीएचडी। सो मेरे अंदर भी ऐसा हो गया था कि मुझे भी पीएचडी करना है, एमटेक करना है, ऐसा हायर स्टडीज में जाना है। बट क्या हुआ कि जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर का जो लोग बाहर निकलने वाला था, उसमें से 2 सीनियर्स को एमसीए में अच्छा कॉलेज मिल गया था, and they actually guide us that okay, you can do MC also and you can get a good placement if you are in a good college. So हम लोग तो सेकेंड ईयर में थे, तो हम लोगों ने भी वैसा ही किया, जो हम लोगों का ग्रुप था वो लोग शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट चाहिए, बट उसके लिए अच्छा कॉलेज भी चाहिए कि प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने मेनली मैं ऐसा किया था कि 2 एमसीए का एग्जाम होता है एक्चुअली। वन इज निमसेट व्हिच इज मोर टू गेट इनटू एनआईटीज, और एक होता है डब्ल्यूबीजे का व्हिच इज टू गेट इनटू कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल ओनली। तो निमसेट में अच्छा रैंक नहीं हुआ था टू गेट गुड कॉलेजेस, अच्छा गुड एनआईटीज नहीं मिला था, बट डब्ल्यूबीजे का में अच्छा रैंक हुआ, और उससे जादवपुर यूनिवर्सिटी मुझे मिल गया था। और चेंजेस क्या हुआ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों का यूनिवर्सिटी का जो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों के इंस्टीट्यूट था, ये है कि जो टीचर्स बीटेक पढ़ाते हैं वो टीचर्स ही हम लोगों को एमसीए भी वो लोग ही पढ़ाते थे। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों को वो मिल जाता था कि वो लर्निंग मिल जाता था कि कैसे हम लोग को अच्छा प्लेसमेंट के लिए कैसे पढ़ना होगा, कैसे कोडिंग नॉलेज बढ़ाना है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए ज्यादातर माना जाता है कि ज्यादातर लोग बीटेक के लिए जानते हैं उसको,
तो हम्म, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा ही था कि हैकाथॉन्स होते थे, उसके हम्म, बाद आपका कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होता था, तो उस एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया था, जो बीएससी में नहीं था हम लोग का। Hmm. Okay, so once you got surrounded by a better coding culture in the जादवपुर यूनिवर्सिटी, जैसे हैकेथॉन्स हो रहे हैं, काफी सारे लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, प्लस आपको वही सब्जेक्ट्स या फिर टीचर्स वही पढ़ा रहे हैं जो बीटेक के हैं, राइट? सो ऑब्वियसली आपने कंपटीशन भी काफी फील किया होगा, राइट? सो वर यू समवन जो कि रेगुलरली लाइक इन हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, और वर यू जस्ट फोकसिंग ऑन cracking a job first, like focusing on basically first clearing your fundamentals, data structures and algorithms, या फिर आप कुछ प्रोजेक्ट्स और हैकेथॉन्स वगैरह भी कर रहे थे साथ में? अ, ऐसा भी नहीं था कि मैं हर एक हैकाथॉन्स या फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन में नाम देता था। मैं हम्म, मेरा दोस्त लोग देते थे, तो उसको देख के मुझे अच्छा लगता था, बट मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, एमसीए 3 इयर्स का होता है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उतना मेरा फोकस नहीं था कि ये सब कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या फिर हैकाथॉन्स में नाम देना। लेकिन हम्म, उसके बाद मैं 1-2 ट्राई करता था देने का, बट मेरा उतना नॉलेज तब नहीं था। बट थर्ड ईयर जब आया, थर्ड ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग कॉम्पिटिशन्स पे नाम देना शुरू कर दिया था, लीड कोड करना शुरू कर दिया था। तब ओके, से मैं जितना हैकाथॉन्स हुआ था या कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हुआ था, उस पे नाम दिया था, एंड उसके बाद से थोड़ा-सा कोडिंग नॉलेज मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। okay. So, Ronak, you mentioned that right after your college, you worked for a startup for some time, and that was also a software engineering role only. So, was it something Yes. that you got out of your college only, or you applied off campus? Oh, no, no. That was from on campus. So Acha. it was like it was the second company that came into my college, and luckily, like uh, it had 5 rounds. So when I heard that it will take, like, they will take a 5 round of interview, I got scared. But like luckily, I got the chance and I get into that startup. But after that, like after that, a lot of companies came into my like college. But Hmm. I was like, uh, मैंने तो सब छोड़ दिया था पढ़ाई की, अच्छा नौकरी मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। बट अगर नहीं छोड़ते तो अच्छा चांस भी मिल जाता, तभी शायद अमेज़न हो जाता या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो जाता, बट या Hmm. ओके, ठीक है। तो रौनक, इस वाले कंपनी में आपने जो आपको ऑन कैंपस मिली थी, इसमें यू वर्कड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, राइट? राइट, हम्म, एंड उसके बाद यू गॉट योरसेल्फ इन Amazon. So can you like tell us, while being in this company only, you started applying to Amazon, and how many other companies that you applied when you were applying for Amazon? So you can just tell us the entire thing कि आप कब और कैसे कर रहे थे prepare उसके लिए? okay. So like personally I like C++, okay, but when I joined the startup, they used to work in Python. अच्छा. So that was like, and startup culture is totally different. So what I had expected that the industry, it will be, and the startup culture, it was totally different from my expectations. So Hmm. I was more into a company which will work in an organizational way, okay, that everything will be organized. But that startup culture, it was like messed up. It's like everything, nobody was there to code review. Nobody was there to guide us properly. Hmm. So I spent around 1 year, and then I got totally fed up. And the thing like मेरा जो ग्रोथ था वो स्टैग्नेंट हो गया था, कि मुझे Okay. पाइथन करना भी नहीं है, बट Hmm. बैकएंड में रहना है, मुझे ये पता था। बट ऐसा हो गया था कि वहां पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो उसके Okay. बाद से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अप्लाई करना Hmm. स्टार्ट नहीं किया, ऐसा हुआ था कि 1 ईयर बाद मैंने लीड कोडिंग स्टार्ट किया फिर से। और उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि हायरिंग, सब कंपनीज क्रेजीली हायर कर रहा था, इवन Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एवरीवन। Okay. तो मैंने 1 मंथ और 2 मंथ्स अपना कोडिंग नॉलेज को फिर से ब्रश अप करने के लिए लगाया था। उसके बाद से हर दिन मैं 20 to 30 कंपनीज में अप्लाई करता था, थ्रू लिंक्डइन और Hmm. थ्रू देयर जॉब पोर्टल्स। एंड for 1 or 2 months, I didn't get any replies from any of the companies. And the Hmm. one that I got reply from, they were saying that they will not take any MCA student, or they prefer BTech students more. So Okay.
उस टाइम पे तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था, बट देन there was Goldman Sachs. I got a reply from Goldman Sachs that they are ready to interview me. So ओके, उससे शुरू हुआ, एंड अच्छा। देन गोल्डमैन सैक्स के बाद ही 2 दिन बाद ही क्या हुआ था कि अमेजोन से भी एक रिप्लाई आया। अमेजोन के एचआर मुझे लिंक्डइन में कांटेक्ट किया कि इफ यू आर रेडी यू कैन गिव इंटरव्यू आल्सो। तो हम्म, सेम टाइम पे गोल्डमैन सैक्स एंड अमेजोन दोनों पे ही चल रहा था मेरा इंटरव्यू, और हम्म, देन अमेजोन में हो गया। ओके, कूल। सो रौनक, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया या अमेजोन हो गया, इन सब कंपनीज में जब आप अप्लाई कर रहे थे तो वाज इट ओनली लिंक्डइन दैट यू वर अप्लाइंग थ्रू, और या फिर आप उनके जॉब पोर्टल्स पे जाके करते थे? मतलब हाउ वाज द एंटायर प्रोसेस लाइक? मेनली थ्रू लिंक्डइन, और जॉब पोर्टल्स में जाके ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू ट्राई, like I used to roam in the job portals of every company, and I used to contact the HR through LinkedIn, and I used to say if they can give me any referrals, or I used to contact the software engineers from those companies, and I used to ask for referrals from them. ओके, ठीक है, रौनक, कूल। सो right after you got a call from Amazon, just tell us the entire selection process. How was it like? How many interview rounds did you have? And क्या क्या पूछते हैं वो लोग फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, एंड इवन आफ्टर लाइक द नॉन टेक्निकल राउंड्स दैट हैपन, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आप वो थोड़ा डिटेल में बता दो। या श्योर। तो फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट में 2 क्वेश्चंस होते थे, और 2 क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चंस, मेनली कोडिंग क्वेश्चंस। वन इज, अगर लीड कोड से मैं बताऊं कि वन लीड कोड इजी क्वेश्चन, वन लीड कोड मीडियम क्वेश्चंस, एंड देयर आर 2 text areas also where we had to actually explain what we have, like what the solution we have given to the questions. ओके, एंड ऑनलाइन असेसमेंट पे ये 2 क्वेश्चंस एंड वो दोनों के एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगर आप वहां से आगे जाते हो, देन देयर वर 4 राउंड्स फॉर मी। अब ये वैरी कर सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, किसी के लिए 3 होता है, किसी के लिए 4 होता है। तो फर्स्ट राउंड वाज इट लाइक 4 ऑफ देम वर टेक्निकल राउंड्स। तो फर्स्ट राउंड था सेम लीड कोड इजी एंड लीड कोड मीडियम क्वेश्चन में, फर्स्ट इंटरव्यू राउंड, और उसमें भी सेम टू सेम आपको सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन किया था, एक लीड कोड इजी क्वेश्चन, एक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन किया था, उसको एक्सप्लेन करना था अच्छे से। एंड देन Amazon, actually in Amazon you will see that they ask questions in with leadership principles also. So Amazon has 16 leadership principles, and they will ask you some situations, they will ask you to explain some situations where you have actually applied those principles. So if someone is applying for Amazon, they need to actually they need to see the Amazon leadership principles also, and those are actually very critical for Amazon interviews. And उसके बाद जो नॉन टेक्निकल में पूछते हैं लीडरशिप क्वेश्चंस। हाँ, जैसे कि if I give any example, let's say if you have, like let's say I had a prior experience before Amazon, right? So they were asking me that like if I had any conflict with any other colleagues of mine, how I resolved that issue, or like this type of questions. Okay. So those are more based on the leadership principles. ठीक है। And then second round भी technical questions, but उसमें एक ही question पूछा जाता है, and those are more of a design type. Let's say design type means they will ask you to design LRU cache, or maybe a linked list, or a double linked list, this type of questions, and you have to explain everything. Okay. ठीक है। So Ronak, you mentioned that when you were in the startup, when you were working in that startup, उसमें ही you realized that you did not want to continue there and you wanted to move out because you did not see your growth. It was quite stagnant there. So like, can you tell us, like, when you realized that you wanted to move out, you started preparing for all these interviews while you were in the job that you were doing, and how much time you were taking out for this, and like, did you like consult anyone, or like you just prepared questions on your own, or मतलब was the
क्वेश्चंस ओनली इनफ, और या फिर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे थे? मतलब हाउ मच इज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली क्रैक companies like Amazon or Microsoft when you're working also? So, projects actually depends on the role you are going to. See, I was in the back end. Okay, so I was also trying to get into back end role only. So, Hmm. आप अगर फ्रंट एंड कर रहे हो तो उसके लिए प्रोजेक्ट ज्यादा, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ Hmm. दिखाना पड़ता है. बट बैक Hmm. एंड के लिए ज्यादातर आपका क्वेश्चन थियोरेटिकली होता है कि लेट्स से सम डिजाइन क्वेश्चंस और सम questions about networking or Hmm. OS. So this type of questions more like so मेरे लिए क्या था कि बैकएंड में जा रहा था, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया था. कॉलेज में जो जो प्रोजेक्ट था मैं वो सीवी में दिया था कि ये मेरा प्रोजेक्ट है. एंड अदर Hmm. देन दैट मेरा मैं जब अप्लाई करना चालू किया था कोई कंपनीज के लिए, तो मैं उसी कंपनी में था. तो टाइम मैनेजमेंट एक इशू हो गया था कि आपको कंपनी का भी काम करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको पढ़ना भी पड़ता है. तो तब एक अच्छा एडवांटेज ये हुआ था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था. तो वर्क फ्रॉम होम में ऐसा था कि जब भी टाइम मिलता था कि मैं ट्राई करता था कोई लीड कोड पे कोई कोडिंग क्वेश्चंस कर लूं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ लूं. तो Okay. उससे हेल्प हुआ था बहुत. Okay. So, Ronak, you mentioned that when you got a call from Amazon, you also got a call from Goldman Sachs. तो आपने डिसीजन कैसे लिया कि आपको Amazon जाना है और Goldman Sachs नहीं जाना है? So decision was not hard actually. कि Okay. so I have some seniors who are working in Goldman Sachs also and working in some other FANG companies also. So Okay. Goldman Sachs ऐसा था, एक तो मनी रिलेटेड होता ही है कि you are Hmm. getting a better package in Amazon also. And the Hmm. thing is, Amazon is also working as a startup only. You can see that it's a big, very, very big MNC, but the work culture here is more into startup culture. तो Okay. ग्रोथ जो मेरा था, तो मुझे लगा था एंड सीनियर से बात करके मुझे लगा था कि Amazon में ज्यादा ग्रोथ होगा rather than going to Goldman Sachs. Okay. तो इसीलिए Amazon. ठीक है, cool, Ronak. So, ठीक है. So, talking about your interview experience at Amazon, you mentioned that for the DSA part and जितने भी technical rounds के लिए questions पूछते हैं वो आप, because you had work from home, so you were preparing side by side, and that is how you were able to crack. But like you also mentioned कि leadership questions होते हैं उनके, या फिर नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट जो है, लाइक HR राउंड क्रैक करना भी बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए, राइट? बिकॉज दे चेक यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिस्पाइट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. तो आप बता सकते हो लाइक आपने कैसे प्रिपेयर करा था नॉन टेक्निकल राउंड क्लियर करने के लिए, और हाउ कैन पीपल आल्सो प्रिपेयर व्हेन इट कम्स टू नॉन टेक्निकल राउंड्स? Okay. So for that, I used to see the Geeks for Geeks. I used to see the interview experiences of Okay. Amazon in Geeks for Geeks and Lead Code. So there is a Lead Code discussion section. There, like people who have actually interviewed Amazon, those people actually post their interview experiences in Lead Code discussions and also in Geeks for Geeks. So from there, you get to know that okay, they ask this type of questions also, and from there only I tried to I tried to understand what are the questions they can ask, and with those things I was able to crack those questions. ठीक है, cool, Ronak. ठीक है, so my next question would be, this will be helpful for people who are still in college, the students, right? So जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आपने भी कहा कि कंप्यूटर साइंस जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे बीएससी में, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक दे आर वेरी मच कोर कंप्यूटर साइंस टाइप, मतलब थियोरेटिकल टाइप्स होते हैं जो कि ज़्यादातर कंपनीज रिलेटेड नहीं होते. लाइक इफ यू वांट टू क्रैक अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल तो वो वहाँ नहीं पढ़ाए जाते. एंड सिमिलरली इट हैपेंस इन मास्टर्स एज वेल कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बस आप एकेडमिक्स में अच्छा करने के लिए पढ़ रहे होते हो, राइट? सो कैन यू टेल अस कि कितना बैलेंस समवन हु इज स्टिल इन कॉलेज शुड मेक बिटवीन द एकेडमिक सब्जेक्ट्स दैट ही हैज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस और डीएसए के क्वेश्चंस रेगुलरली करना और प्रोजेक्ट्स या हैकेथॉन में प्रिपेयर मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब कितना बैलेंस एक इंसान को रखना चाहिए अगर वो कॉलेज में अभी भी है? Again, it depends on the on the time you have. Okay, so the thing is,
कंपनी क्रैक करने के लिए डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन कंपनी में वर्क करने के लिए आपको वर्क कल्चर जो होता है वहाँ पे डीएसए बहुत कम यूज होता होगा, कि आप जो वहाँ पे पढ़ रहे हो क्रैक करने के लिए, ट्री पढ़ रहे हो, एरे पढ़ रहे हो, ये सब टॉपिक्स जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री वर्क में करते हो ये उतना यूज नहीं होता है कि आपको कोई ट्री ट्रेवर्सल करना है या फिर कोई एरे ट्रेवर्स करना है. दोज आर प्रीटी नॉर्मल, बट द थिंग इज व्हेन यू वर्क इन दोज प्रोजेक्ट आपको तब ओएस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए या फिर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या होता है, लेटेंसी इश्यूज आता है एंड देयर आर अदर इश्यूज आल्सो. तो उसमें थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है, या फिर ऐसा होता है कि लेट्स से यू आर इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू SD2 from SD1, okay, then you need more knowledge, like then you need to do design of projects, and for those things you need some theoretical knowledge rather than some DSA knowledge actually. तो दोनों को ही बैलेंस करना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो कैसे मैनेज कर रहा है. आपको अगर कंपनी क्रैक करना है जल्दी, ओके, डीएसए इज देयर फॉर दोज थिंग्स, बट आपको अगर ज्यादा काम सीखना चाहिए, काम सीखना है, देन आपको दोनों को ही बैलेंस करके पढ़ना होगा. Okay, understood. Ronald, ठीक है. So my next question would be around now that the students have studied DSA, हमने preparation अच्छे से कर ली है. When it comes to actually finding jobs, right? Because like people or students being from tier 3 college जहाँ पे कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है और उनका सारा का सारा होप मतलब ऑफ कैंपस ही है ढूंढना. एंड लाइक यू ऑल्सो मेंशन कि आप लिंक्डइन पे आपने रीच आउट किया था और वहीं से आपको कॉल बैक्स आए. तो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू यू नो basically reaching out to recruiters on LinkedIn, and how should one basically have a profile ready on LinkedIn? मतलब can you just tell us कि आपने क्या क्या चीजें करी थी LinkedIn पे recruiters को reach out करने के लिए, and what all worked for you? So basically, whenever you are reaching out to someone, you have to give all the details to them actually. So try not to push anything. Let's just politely say, okay, I need a referral from you and these are my details, and if you want to give any referral you can reach out to me, okay. And if they are not replying, you have to understand, most of the time it happens that if someone is not replying, then like I used to get angry on them actually that they are not replying, but like everyone have to understand that everyone has some work, okay, and whenever they are getting in some time they will reply back. But yeah, you have to have patience for that, and you have to ask politely that you need a referral, and other than that you need luck. Okay, great. That is great piece of advice, Ronak. So one last question. It's been quite some time for you here in Amazon working. Can you tell us how has the experience been so far? What is the best thing that you like about working in Amazon? All that. Okay. So I had like Amazon is keeping up to my expectation a lot actually. So as I said before that I wanted to work in a company which works in an organizational way. So like here everything is organized but messed up at the same time, okay. And as an SD1, so here there is no layer of hierarchy. So a SD1 can also say everything and everyone will listen to them. That is the that is the best thing that I got here actually. और यहाँ पे क्या होता है कि if you want you can lead a project, वो भी बहुत अच्छा चीज है. एंड जैसे मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था और मैं यहाँ पे जो टीम में ज्वाइन किया था वो बेसिकली न्यू टीम इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द टीम्स आर इन यूएसए. तो इसमें क्या होता है कि न्यू टीम जब होता है तो उसमें मैं ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, बाकी सब फ्रेशर्स थे. तो इससे क्या हुआ कि एज एन SD1 भी मुझे ऐसा काम करना पड़ता है जो SD2 या SD3 लेवल का हो. तो इससे भी मेरा बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ गया है. एंड या आई एम ट्राइंग टू improve more. Great, Ron. So now that you are in one of the fan companies, right, the dream companies of all the software developers, are you still studying DSA, or you just do your job lately and you get busy there only? I am studying more than what I studied before getting into Amazon.
So like now I am not getting any time. Let's say if I get any project, I have to do some uh, the POCs on that, or I have to do some design consultation, or I have to do some meeting with other teams. So उसमें आपको बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है कि कैसे आप अप्रोच करें सबको, या फिर कैसे आपको डिजाइन करना चाहिए, या फिर कैसे डॉक लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट लिखना चाहिए. तो या ये सब Okay. So चल you रहा are studying more than ever now for है. this. यस. यस. Okay. Great, Ronak. Cool. Yeah. So now that you're in Amazon, any other plans you have in future, like any other company you're planning to crack, or you're fine with your job right now? No, so basically I have a plan, but the thing is I want to be capable for like SD2 or SD3. Then I'll try to do try to go in other companies. But मुझे अभी नहीं लगता है कि Amazon से अच्छा कोई अभी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए. एंड अभी सीखने का टाइम है, तो अभी सीख लेते हैं, बाद में देखेंगे. Amazing. Cool, Ronak. So one last question: any piece of advice you would like to give to students, who did their graduation not in a BTech or a non-tech field, and they want to become a coder, they are aspiring coders, and they want to get started in college itself, or maybe people who are working professionals working in a non-IT industry, but they want to transition. Any piece of advice that you would like to give them? Yeah, so I get a lot of messages in my LinkedIn that these type of students who are trying to actually get into computer science from other streams, or who are from tier 3 college or from different streams, that they want to get into some product based companies. So the thing is, like, you have to be skillful. Nowadays nobody cares about your degree. Okay, any product based company, if you have skill, they will take the interview. But from interview, uh, it's you who is capable, like who is responsible to get into that company. Okay, and for that you have to be skillful, you have to have patience, because from tier 3 colleges, like, it's not like you are only applying to product based companies, you have to apply on other companies also, right? So other companies mostly prefer BTech, so you have to have patience and always try. If it is not the first time, if you're not succeeding in the first time, you will succeed in the second time or in the third time, but just try. So the thing is, patience, keep trying, और स्किल चाहिए ही. बाकी ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ाई करते रहो, बस सब हो जाएगा. Amazing. That is amazing piece of advice, Ronak. Thank you so much again for taking out time to do this with us. I hope people watching this, watching your story, take inspiration from you and get started with their preparation as soon as possible and stay consistent at it. Yeah, thank you so much. That is it for today's video, guys. I hope you all liked it with Ronak. Please like and share the video, and don't forget to comment down below your queries that you want us to cover in our next career journey video. And if you guys are also interested in learning coding, you want to also pursue a career in being a developer, then go to our website and take that skill eligibility test. Once you take that test, we will recommend you which course is best for you, be it MERN stack or Java full stack. Both the courses have amazing instructors and top IT mentors who are there to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out our course on our website. And if you have any query, you can just reach out to us. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much.